It's awesome to see people talk about EVMOS, right? Content creators discussing it, putting it out on YouTube, on Twitter. However, you will not see big ones discuss this, maybe because they didn't get an allocation, I guess. Sooner or later, they'll catch up, right? So ladies and gents, this is not about the influencers. However, once in a while, I like to search on YouTube, see what comes up, what people are talking about a certain project I'm invested in or I'm interested in, right? So I searched EVMOS recently, and I came across one video, which is right here, which I'm going to play in a second, right? There are quite a bunch of people, content creators talking, which is awesome, right? Yeah, it's really good to see people. I'm right here, awesome. But this video, particularly, why am I selling my 80% EVMOS stake? 3 reasons. Modern trader. It was done 9 days ago. All right, it's about 13.22 minutes long, which is pretty long. I'm gonna try to play it fast because he points out a few things which make sense to me. He talks about the inflation of EVMOS, which is about 100% or so. I don't know, but there are certain. Well, I think differently. All right, like I said, people can do whatever they want with their money. I'm not here to give you my any sort of advice. I'm basically telling you what I do and what I think about the certain project. And that's it. So you can buy, sell, do whatever. So here's the thing. Let's play this. All right, and I'll give you my 2 cents. So नहीं कि आज की इस शॉर्ट वीडियो में hold on. एवमोस के चार्ट को What भी is this? एनालाइज What is he करेंगे talking about? और What साथ ही language साथ is this? मैंने जो एक डिसीजन लिया है Hold on. What? क्या लिया? 80% जो मेरे एवमोस हैं hold उनको on. मैं सेल करने I'll do जा my best to convey the message to you as accurately as possible. All right. So this is in Hindi. Yeah, okay. So yeah, I'll do my best. Let's see. I need to revive the Bollywood guru in me to figure this out. All right. So let's do this. रहा हूँ तो उसके पीछे क्या I'm रीजन gonna है play वो this भी मैं fast. आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर तरीके से कह देना चाहता हूँ कि ये किसी किस्म से कोई फाइनेंशियल एडवाइस All right. So he said he's gonna give you his point of view. It's not financial advice. इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई थी। उस टाइम जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन की थी। आप इस वीडियो को अभी भी देख सकते हैं। हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने क्लियर तरीके से कहा था कि भाई अगर ये आपको $1 $1.25 के अराउंड दिखाई दे तो आप छोटा मोटा बाय कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा All right, so he just said he created a video previously which explains his strategy, and if you want to watch it, you'll find it useful. And then he says he mentioned that if you get it about $1 or $1.50, buy area, just pick it up. That's what he said so far. bearish था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत नीचे वाली प्राइसेस हमको देखने को मिलेंगी। He was expecting it to be more bearish. He was expecting the price to be much lower. But well, वीडियो में तो मैंने आपको क्लियर तरीके से बता के रखा था कि इसका जो अल्टीमेट बॉटम है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 20 सेंट से 40 सेंट के अराउंड, लेकिन ये इसका अल्टीमेट बॉटम मैं एक्सपेक्ट what? Did he just say he was expecting a bottom at 20 to 40 cents on EVMOS? That's brutal. Wow. कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इसको अभी वहां पर जाना है, ये इसका अल्टीमेट लो। Bruh, भैया, why are you flooding my bag? काई को ऐसा करता है? बच्चे का लात जान लेगा क्या? Seriously. Why are you fighting, bro? Oh my जो god. बॉटम बनता है ना बेयर मार्केट का, तो ये इसका अल्टीमेट बॉटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वीडियो में मैंने क्लियर तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग कोई बात सुनते He says it's the ultimate bottom in a bear market, according to him, EVMOS. कोई बात कुछ समझते नहीं है, उन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। सर ये कब जाएगा 20 सेंट? यहाँ पर देख And then he talks about later. 179 एवमोस मैंने मजीद बाय किए थे। इवन तो आने वाले 5 से 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें मैं बेरिश हूँ, $1 से नीचे मैं इसको देखता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखें तकरीबन 200 के अराउंड मैंने ये टोकन्स बाय किए थे। डेट एंड टाइम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 2022। He's showing you he bought 200 or 176 यहाँ पर ये जो आपको येलो लाइन दिखाई दे right रही है here. इसी दिन मैंने बाय किए थे और प्राइस थी तकरीबन 1.3637 के अराउंड। तो यहाँ पर He bought it at 136 to 40 cents. तकरीबन 247 USD से मैंने बाय किए थे। कितने मिले थे? 179। तो यहाँ पर जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.38 के अराउंड मेरी एंट्री, और वो जो 300 थे वहां से जो स्टेकिंग रिवॉर्ड मुझे मिल रहा था उस टाइम तक लगभग 50 60 70% मेरी जो कॉस्ट थी उसको मैं कवर कर चुका था। So, with the staking rewards from EVMOS, he covered 70% of the cost, initial cost. Awesome. I told you, take profits. That's what he did, right? मतलब कि मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया, मैं अपनी कॉस्ट कवर कर चुका था। यहाँ से जो मुझे प्रॉफिट हुआ था उसी पैसे से मैंने क्या किया, जब यहाँ पर देखा कि भाई इतना बड़ा क्रैश यहाँ पर आ चुका है तो चार्ट के हिसाब से मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर अगर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा इसमें बाउंस आए तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, और मेरा रिस्क तो कुछ है नहीं क्योंकि जो प्रॉफिट मुझे हुआ था उसी के जरिए मैंने इसको बाय किया। उस टाइम की बात अलग। So he used the rewards. He sold it at decent price. He used the rewards to buy back in when the thing dropped. By the way, this was 9 days ago, September 4th. And you know how things change in crypto real fast, right? Because right now, earlier on, right, I created a video telling you about the EVMOS pump,
which was significant from $2.70 to $3.15. And when you look at this video, right, it's obviously over here it was sitting at about, I don't know, $1.70 or so. So let's see. अभी की बात अलग है, ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद बाकी हिस्ट्री आपके सामने है। अगर मैं केपलर वॉलेट के अंदर चला जाता हूं तो टोटल 500 दिन ब दिन ये जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है ये कम बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो इसमें मैंने आपको क्लियर Okay, so I'm going to tell you the key points why he thinks and why he's selling. All right. तरीके कहा था कि भाई मैं सेल नहीं करने वाला, और उसके पीछे की जो रीजंस थे वो सारी चीजें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। मैंने बोला अगर ये नीचे जाएगा तो मैं सेल नहीं करूंगा, इसको अगले बुल मार्केट तक रखूंगा, स्टेकिंग से जितना कमा सकूंगा उतना कमाऊंगा, लेकिन इसको सेल नहीं करूंगा। तो फिर ये अचानक से क्या हुआ तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। Initially, he said he wasn't about to sell. He would have his plan was to hold it till the next bull market, but then he had a change of plan. That's what he's going to explain. प्राइस है वो यहाँ पर रिवर्स कर गई, प्राइस में अच्छा खासा एक बाउंस आ गया। ये जो कैंडल आपको दिखती है कि मैं अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर निकल जाऊँ, स्टेकिंग रिवॉर्ड से भी बहुत कमाया, और जो इसकी प्राइस एप्रिशिएट हुई है तो उसका बेनिफिट भी he made money from staking reward, also from the token price appreciation. So अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 2 से 2.5 दिन के अंदर मेरे जो एवमोस है वो अनस्टेक हो जाएंगे। 100 एवमोस मैंने बचा के रखे हैं स्टेकिंग के लिए। भैया थोड़ा सा जल्दी यार, I'm playing in 2x। मैं किसी बड़े कॉइन में भी डाल सकता हूँ, जैसे कि पोलका डॉट है, $7 के अराउंड चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं उसमें इस पैसे को डाल दूं, या फिर कोई और कॉइन देखूं जो कि मुझे अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा हो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्ले हो। कुछ और रीजन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मेरे इस डिसीजन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि इन्फ्लेशन कितनी है, 173%. So he basically wants to get out because he was profitable and he expects the whatever thing. Second is this one. Oh, because the APR is reducing. So he believes since the APR goes down, people are going to dump. But hold on. If that was the case, then it would happen with every other chains. But again, there's a possibility. You get the point, right? I mean, that's why I believe in decentralization. So you spread around, like spread across throughout the validators. Don't just pick the top 3 or 4, because then you're giving them more power. And I don't know if their intentions are malicious, then you know. But again, people can do whatever with their bags if you're taking profit. And again, this is his point of view, okay? But there's a core thing he's missing out, and this was 9 days ago, right? So 251%. So my thing is, Juno is at 60%. It's pretty decent, right? Of course, it dropped from 40 to, you know, because of that whale shenanigan. But beside that, we had the bear market. A lot of the tokens right now are actually bottomed out. If you look at, let's see real quick, right? Juno, you talk about Mantle or Kuji or Stars. Look at Stars, right? For example, if I want to see it from 1 year, check this out. It's already bottomed out. It's pretty bad. From 57 cents, if this is accurate, from 28th Feb, right? All the way to right now, 3 cents. So if I believe in this ecosystem, and if I buy it right now and stake it at whatever percentage APR, dude, I'm fine. Yeah. But EVMOS is brand, I mean, it's new. So, you know, it's newer than all the other ecosystem. I mean, in the cosmos right now, right? So yes, it's possible. So actually, let's finish this real quick. So he also mentions something important, which is inflation, 107%. That is a good point. All right. But again, if you were buying at all-time high, $6, $5 and not taking profits, and you know, yeah, sure. So let's see. 7%, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर टोकन की जो सप्लाई है 107% इंक्रीज होगी। जब so in a year obviously 107% increase, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर तो बनेगी। स्टेकिंग रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया था, स्टेकिंग करना स्टार्ट की थी, तो तकरीबन 500% के अराउंड था, और अभी आप देखें। So he joined at 500% staking APR. By the way, I joined 1300,000. Yeah, that was probably prior to this. So he joined at 500% APR. He took out 70% of his initial. All right, and now he's saying the APR is gonna drop, obviously as usual, right? More people get in, the price goes up, and inflation. These are the two main reasons behind this whatever sell. तकरीबन 285% के अराउंड आ चुका है, और ये आने वाले टाइम में कम होता चला जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर मार्केट से बाय करके उसको स्टेकिंग के ऊपर लगा रहे हैं, और जैसे जैसे लोग यहाँ पर मजीद बाय करके स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे तो स्टेकिंग रिवॉर्ड कम होता चला जाएगा। जितने ज्यादा लोग यहाँ पर स्टेकिंग करेंगे, स्टेकिंग रिवॉर्ड उतना कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड है वो डिवाइड होगा उतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स में। ये तो कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि भाई इसमें वॉल्यूम नहीं है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम नहीं है, $1 की इसकी वॉल्यूम है, जो कि बहुत ही ज्यादा। Yeah bro, but come on यार, क्या बोल रहे हो? Look at this pool. Yeah, sure, the volume is not as high as much as what you used to. I mean, the other, you know, the pools have. But dude, when I joined, it was less than $1 million. Just check my previous videos. It was less than $1 million. Right now, it's sitting at 9.2 million, which is decent. But again, he has his points, which makes sense, because once the rewards dry out, the APR goes down, people will diversify. They want to take out profits, and there will be sell pressure. That's for sure. All right. So yeah, I want to be totally unbiased. I love EVMOS, man. That's not going to change. And again,
let's finish this because there's another thing he didn't mention. The development. टोकन को अगर कोई सेल करे तो इसकी जो प्राइस है He doesn't mention about the development in this ecosystem. अगर कोई थोड़े से टोकन बाय कर लेता है तो ये फौरन से पंप हो जाता है, तो मतलब कि इसको मूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है। Yeah, he mentions that it's easy to move this, like I said, right? When you have less liquidity, the price movement is pretty easy. You can move a market with low buys. एकदम से बहुत बड़े डंप भी हमको देखने को मिल सकते हैं और एकदम से बहुत बड़े पंप भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जब मैं 90% यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, स्टेकिंग रिवॉर्ड मैंने He's already 90% profitable. मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इस कैंडल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तकरीबन 1% जो है यहाँ पर प्राइस मूव हुई है, मतलब कि इस 15 मिनट में 1% प्राइस जो है ऊपर गई है, लेकिन इस प्राइस को 250 टोकन सेल हुए, 250 टोकन सेल होने से 2% प्राइस नीचे लौट गई। He's just telling you the volatility, like I said, the price action. यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम है और यहाँ पर मूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा बाइंग या बहुत ज्यादा सेलिंग चाहिए। यही था कि ये नीचे को गया नहीं, वो भाई टाइम लेती है चीजें प्ले करने में, टाइम लेती है महीनों तक। इसकी जो प्राइस है अच्छी तरीके से 5 से 10 सही है, टाइम लेती है। की बात करें किया जा सकता है और इसको इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है, दोनों साइड पे, ऊपर की साइड पे भी, नीचे की साइड पे भी। All right, so that's all I wanted to play, okay? So his reasons were straight. Inflation rate, right? 100%, I get it. Juno has about 40%, right? And then mention about the APR going down because most people are staking right now because of the APR. The APR goes down, people will decide to sell. But hold on. Yeah, but if you're already profitable, I don't know, like I said, anybody, people think differently, right? They have their own strategies. So one thing he didn't mention, development in this ecosystem. It's all about the inflation and stuff. What about the development? What about the usage and people adoption? I mean, that's driving the price up, right? It's not just people buying this just for staking and all that. People will actually use it, just like people doing stuff on Ethereum network. This is Ethereum and Cosmos. So he didn't mention anything about development, which actually I've been focusing on most of the time. But he has points though, right? I mean, he seems more smarter than me, man. This guy knows numbers and shit. I mean, I'm just a noob pleb who's trying to figure throughout this whole modern finance and stuff, right? And I'm just giving you my 2 cents. All right, so ladies and gents, EVMOS, again, he talked about the dump. Sure. Recently, it was about 100, I don't know, there was a huge buys here. 100,000 plus buys, which took the price up. And could be exchanges, right? Could be people are, stacking for airdrops. Okay, anything can crash. Any crypto can go to zero, like people say. We have seen with Luna and all this stuff. All right, so fingers crossed. EVMOS, Pumpy, come on, EVMOS, come on, Pumpy.